Welcome, dear students. In the first part of the 10th chapter, we need shelter. I already explained you about why we need house. Why we need house? We need house so that it protects us from heat, cold, rain, wild animals, stray animals, and thieves. And what are different types of houses? First one is kacha house, with that we can see in the village that the name of the house is hut, and also we can see the pakka house that we can see in the cities. And there are different types of pakka house like apartment building, bungalow, single storied house, and multi-storied house. So today we will see a next topic of this chapter, that is types of roofs. Roofs means ऊपर की छत. ऊपर की छत हाउस की कैसी होती है? हॉट प्लेसेस है वो हाउसेज विथ अ फ्लैट रूफ, जहाँ पे हमारी जैसी सीज़न होती है, गर्मी की सीज़न, बहुत बारिश या बहुत बर्फ़ नहीं पड़ती, उसके ऊपर जो हाउस की रूफ होती है वो फ्लैट होती है. यू कैन सी इन द पिक्चर ईयर, यहाँ पे जो टेरेस है रेड कलर की, वो टेरेस को फ्लैट रूफ कहते हैं. जो हमारी जैसे सीज़न के घर होती है वहाँ पे रहते हैं, उसके हाउस फ्लैट रूफ्स होते हैं. But places with a heavy rains and snowfall have houses with a sloping roof. This helps snow and rainwater to slide down the roofs. Means जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है, जैसे ईस्ट ऑफ इंडिया पार्ट ले लो या स्नोफॉल जैसे कश्मीर में ले लो, वहाँ पे घर जो होते हैं उसकी रूफ स्लोपिंग होती है ज़्यादातर. क्यों? कि वहाँ पर स्नो और रेनफॉल अच्छे से स्लाइड होके नीचे पड़ जाए. सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न देर आर टू टाइप्स ऑफ रूफ. वन इज़ फ्लैट रूफ जो फ्लैट होता है, और सेकेंड वन इज़ स्लोपिंग रूफ. फ्लैट फुल रूफ हमारी जैसी गर्मी वाली सीज़न जहाँ पे होती है उसके घर फ्लैट होते हैं, और जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है और स्नोफॉल भी होता है उसकी रूफें स्लोपिंग होती है, क्योंकि स्नो और रेनफॉल स्लाइड अच्छे से बहुत जल्दी से स्लाइड होके नीचे गिर जाए. So this is the there are two types of roof. Now see what is a good house. Good house हम कैसे कहते हैं, किसे कहेंगे? A house that is neat and clean in a good is a good house. जो भी हाउस है आपका छोटा हो या बड़ा हो, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो नीट होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए. छोटा बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नीट और क्लीन होना चाहिए. इट मस्ट हैव द फॉलोइंग थिंग्स इन इट. और उसके साथ साथ ये तीन चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए. हमारे यहाँ पे घर पे होता ही है सब कुछ, हमारी मम्मी हम अच्छा से नीट और क्लीन रखती ही है. और फर्स्ट पॉइंट इज़ मैनी डोर्स एंड विंडोज़ टू लेट इन सनलाइट एंड फ्रेश एयर. हमारे घर पे बहुत सारे डोर और विंडोज़ होने ही चाहिए, सो फ्रेश एयर आ सकते, फिर फ्रेश एयर आ जा सकते हैं और सनलाइट भी अच्छे से आ सकती है. सो बिकॉज ऑफ द नाइस the air and nice breath and nice air, because of the nice ventilation of doors and windows is very necessary in a good house. सेकेंड वन लॉट्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स भी बहुत ज़रूरी है. अगर इंडोर प्लांट्स आपके पास नहीं है तो बाहर ओपन एरिया में भी प्लांट्स हो तो अच्छा है. सो इट विल गिव यू अ नाइस लुक, इट विल बी यूज फॉर डेकोरेशन एंड इट विल गिव यू अ ग्रीन लुक टू योर हाउस. सो लॉट्स ऑफ प्लांट्स होने चाहिए. थर्ड वन डस्टबिन टू थ्रो वेस्ट. डस्टबिन तो सभी घर में होते ही है, एक नहीं पर दो तीन होते हैं. घर के अंदर भी, इंडोर में, किचन में भी हम एक रखते हैं, बाहर भी एक रखते हैं. सो डस्टबिन इज़ यूज टू थ्रो अ वेस्ट मटीरियल. सो हाउस हमेशा क्लीन रहेगा. सो these are the three things important to be to make a good house, and it should be neat and clean. So your grandma asks, the house in which we live with our family is our house. जो हमारे घर में हमारे फैमिली के साथ रहते हैं वो हमारा घर है. What does living together teach us? तो साथ रहने में हमें क्या सीख मिलती है? फर्स्ट वन टू लव ईच अदर. ट्रू, हम एक दूसरे को लव करते हैं. सेकेंड वन टू फाइट ईच अदर. फाइट कभी नहीं करते, सो रॉन्ग. टू बी रूड टू ईच अदर. एक दूसरे को रूडली बात नहीं करते, सो रॉन्ग. टू हेल्प ईच अदर. येस, to help each other and to love each other is the most important thing that we learn from to a family, and also when we stay together in one family. So you have to just tick down right or wrong in a textbook. Now see the exercise time.
Exercise A. Circle the correct answer. A hut is a kacha or a pakka house. It is a kacha house, so make a round there. Second one, pakka houses are made of straw or a bricks. It is made up of bricks. From straw, kacha house is made. From bricks, pakka house is made. So make a circle there in a bricks. Third one, a bungalow is a small or a big house. It is a big house. So make a circle in a big. A house must have lots of plants or a bricks around it. The house must doesn't have a bricks around it. It must have lots of plants. So make a round there. See exercise B, fill in the blanks. You have to write everything in a textbook also. A house protects us from heat, HEAT heat, COLD cold, RAIN rain, STORM storm, THIEVES thieves, and animals, that is ANIMALS animals. So you have to write fill all the gaps properly. A house protects us from heat, cold, rain, storm, thieves, and animals. Now see second one. Two types of houses are kacha and pakka houses. KUTCHA kacha and PUKKA pakka house. Third one. Dash houses are mostly found in villages. In villages there is always a kacha house. So you have to write a kacha. KUTCHA kacha. Fourth one. A pakka house is made of things like cement, bricks, iron, concrete, and wood. CEMENT cement, BRICKS bricks, IRON iron, CONCRETE concrete, and WOOD wood. So all the things you have to write. How does the pakka house is made up of? Cement, bricks, iron, concrete, and wood. A good house is neat and clean. NEAT neat and CLEAN clean. So here we complete our exercise A and B. You have to also complete in textbook. Now draw and color a house found in a place with heavy rains and snowfall. Here you have to draw a picture of a house that has a which roof? Sloping roof, right? You can see here the picture of a sloping roof. You can draw this type of house here, so that because the house with the heavy rains, place with the heavy rains and snowfall has most of the time has a sloping roof. So that picture you have to draw in your textbook as exercise C. And exercise A and B you have to write one time in your notebook and complete in textbook also. Exercise C only in your textbook. And now page number 206, activity time. Here are some of the houses. Example is already drawn. You have to just color it. See, look at the picture of some special house. There are other than kacha and pakka house. There are also some of the houses are also special house that you will study in bigger classes. Read their names and color them. You have to just now read their names and color them. First one is a tent house. Tent house is just a temporary house. When we go for any camping, we live there. So it is a special house that you will study in a bigger classes. You have to just color it. How you like it, you just color the picture. Second one is a houseboat. It is mostly seen in the southern part of India, in the Kerala and Karnataka and Trivandrum. It is a houseboat in which the fishermen or travelers live there. Third one is a stilt house. Stilt house is mostly in the picture where there are so many cyclones and earthquake is coming. It is mostly being built near the island also. So it is a stilt house. You can see it is mostly made up of wood. So these are the special house, and that you have to study the name and color the picture very nicely. So thank you very much, students. Bye bye.